Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. I'm Ashish Bhargav and welcome to another episode of Daily News Analysis. And we do from Monday to Friday at sharp 11:30 a.m. And in this newspaper analysis, we discuss about all the important news from all major newspaper covered in this session. Majorly, we discuss about the Hindu and Indian Express. As we know, most of the question they are fetched from the two newspaper, which is the Hindu and Indian Express. And before starting the session, one humble request for everyone is if you are new in this channel, please subscribe the channel as well and do not forget to press the bell icon. So I welcome each and everyone here and please share this class to the maximum number of students and I hope that you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे. चलो. So here in daily news analysis, we discuss about national news, international news, economy-based news, sports-based news, science and tech, personal news, summits and conference, miscellaneous. And apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict. That verdict is very, very important. Supreme Court verdict, which means any amendments, any bill that we discuss about what is the constitutional provision behind this, especially for the law entrance exam like SLAT, CLAT, AILET and all. And we also discuss about the state initiative. This is very, very important. That will gives you the idea that which state had taken such kind of initiative. And here is quote of the day. If your voice is high, only a few people will hear. If your thought is high, then many people will listen. And to inculcate this thought process, you have to develop to read the newspaper. So you have to develop such kind of temperament to read the newspaper. And just one small positive thought in the morning that can change your whole day. And study hard, no matter if it seems impossible, no matter if it takes times, no matter if you have to up all night. Just remember that the feeling of success is the best thing in the entire world. And here is questions of the day. And the questions of the day is important because it gives you just a second. It gives you immense idea about what kind of questions they can frame in your exam. So here is the very first article is voice deepfakes. Many times we have studied about deep voice fake, but in this newspaper article we discuss about what exactly it is, and the things that you need to understand is what exactly is voice deepfakes. So what was the controversy surrounding the voice cloning service provided, that is 11 apps, and what are the potential threats around artificial speech synthesis? Can audio deepfakes be detected, and what is the concern regarding this technology and creative industry? So we have to know about the crux. So what is voice deepfakes? So voice deepfakes are one of the closely mimic a real person voice, and the voice can accurately replicate tonality, accent, and cadence and other unique characteristics of the target person. And people use AI, which is artificial intelligence. So that artificial intelligence is somehow detrimental for the people who are watching this, and robust computing power to generate such voice clones or synthesis voice. So sometimes they're targeting the many persons about the prime minister and president of our country, and people are getting confused that whether the person is really spoken the word or not. So that we can see that sometimes it can be it can take weeks to produce such voice according to Speechify and text to speech conversion app. So how are voice deepfakes created? So to create deepfakes, one needs high-end computers with power graphics cards leveraging cloud computing power. So what are the threats? As I told you that attackers are using such technology to defraud users, steal their identity, and to engage in various other illegal activities like phone scam and posting fake videos on social media platform. So according to one Speechify blog post back in 2020, a manager from a bank in a UAE received a phone call from someone he believed was a company director, and the manager recognized the voice and authorized a transfer of $35 million, and the manager had no idea that the company director's voice was cloned. So that kind of fraud has been taken by using of deepfakes.
मीन्स दैट कि आपकी सिमिलर वॉइस उसमें ट्रैक करते हैं एंड दैट वॉइस हैज़ टू बी गिवन टू समवन सो दैट पीपल गेटिंग कन्फ्यूज कि वेदर द सेम पर्सन इज टॉकिंग टू मी और नॉट, राइट. एंड व्हाट टूल्स आर यूज फॉर द वॉइस क्लोनिंग? ओपन एआई सिस्टम होती है विच वी कैन से दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माई ओन वॉइस, रिजम्बल डिस्क्रिप्ट करते हैं उसे, री स्पीचर्स होते हैं, आई स्पीच आर सम ऑफ द टूल्स दैट कैन बी यूज फॉर द वॉइस क्लोनिंग, right? And this is for your awareness, to not try to attempt that kind of things. Please don't think that I'm not here to endorse such kind of article, but I'm just here to make you aware that that kind of fraud is taking on with the help of deepfakes, right? What are the ways to detect of voice deepfakes? So to detecting voice deepfakes need highly advanced technologies, software and hardware to break down speech patterns, background noise and other elements. तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटीज टूल्स हैव येट टू क्रिएट फुल प्रूफ वेज टू डिटेक्ट ऑडियो डीप फेक्स, स्पेसिफाई नोट्स एंड उसके लिए रिसर्च लैब्स बनाए गए. इन आवर कंट्री दैट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जितने भी साइबर सेल के क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, दैट इज हैंडल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. द प्रोग्राम्स लाइक डीप ट्रेस आर हेल्पिंग टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन. डीप ट्रेस जो यूजर्स होते हैं उनको कंबाइन एक एंटीवायरस दी जाती है, स्पैम दी जाती है, टू होम यू यूज टू कॉल, और उसको वो ट्रैक करते हैं कि इट मीन्स उसकी वॉइस क्वालिटी, उसका पिच ऑफ साउंड, एक्सेंट एंड ऑल दीज थिंग्स. एंड द कॉल सेंटर्स कैन ऑल्सो टेक स्टेप्स टू मिटिगेट टू द थ्रेट फ्रॉम वॉइस डीपफेक्स. So according to voice recognitions, engineers at PinDrop callback function that can end suspicious call and request an outbound call to the account over the direct confirmation. So that is called MFA. MFA is what? Multi-factor authentication. An anti-fraud solution that can reduce the deepfake risk. That is called MFA. So we can read about multi-factor authentication that is required for the deepfakes. Now moving further, here is very sad news. Over 2,600 killed as Turkey, Syria reels under earthquakes. That was a major earthquake struck Turkey and Syria on killing more than 2,600 people and flattening thousands of buildings and rescue dug with bare hands of survivors. Now we can say, as we can see here, Turkey president declares state of emergency in earthquake hit province. NDTV News, CNBC. Turkey President Erdogan declares 3 months state of emergency for quakes. Turkey President Erdogan says Western mission will be paid for closer. Now, the major earthquake struck Turkey and Syria. इसमें बहुत सारे लोग मरे और इसमें इशू क्या था? The tremors of first quakes were felt on February 6 with the epicenter located near the city of Gaziantep in south central Turkey. उसका मैग्नीट्यूड था वो 7.8 था, was measured on the moment magnitude scale, and at least 40 aftershocks followed the first quake with some of the magnitude at high 6.7. साइंस क्या है उसका earthquake से पीछे? Because Turkey is a seismically active zone, right? Seismically active zone का मतलब होता है जहाँ पे there is more vulnerable for the earthquakes. And we need to understand that कि like जो quakes थे that struck along with the well-known fault that is called Anatolia tectonic blocks. And Turkey has been getting hammered by a series of powerful earthquakes since the early hours of the Monday, with the first one and the magnitude was 7.8. And the region where the earthquakes has struck lies along with the well-known seismic fault that is called Anatolia tectonic blocks. As we can see it here, here is an erosion plate. I will let you know that what exactly this one plate is working. सो सेकेंड मैग्नीट्यूड फिर 7.5 में हुआ. एंड उसके बाद ये सेस्मिक एक्टिव जोन्स जो हैं वो क्या होते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल. देखो, द मैकेनिज्म एंड लोकेशन ऑफ द अर्थक्वेक्स आर कंसिस्टेंट विद द अर्थक्वेक्स हैविंग अकर्ड ऑन ईदर द ईस्ट अंटोलिया फॉल्ट जोन और डेड सी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जोन. जो मैग्नीट्यूड होता है इज अ मेजर ऑफ हाउ बिग द वेव्स आर, राइट? सो वाइल द स्ट्रेंथ रेफर्स टू द एनर्जी इट कैरीज एंड मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड ऑन द algorithmic scale, which means the seismic waves produced by a magnitude of 6 earthquakes have 10 times higher amplitude than one produced by a magnitude 5 earthquakes. जो shallow earthquakes होते हैं generally more devastating because they carry greater energy when they emerge on the surface. और theoretically ये possible होता है because of a lead time to few seconds between the time of the origin of earthquake and time it reaches to the earth's surface.
ये इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं कि अर्थक्वेक्स कैसे होते हैं। इसमें आपको पहले फॉल्ट समझनी है। फॉल्ट क्या होता है? फ्रैक्चर इन द रॉक दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट। ईपी सेंटर होता है पॉइंट ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ अबव द फोकस। प्लेट्स होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वी हैव स्टडीड मेनी टाइम्स। Seismic waves are waves that transmit the energy released by an earthquake. Focus, which is hypocenter, the point within the earth where an earthquake ruptures start earthquakes. And earthquakes are caused by sudden release of stress along fault in the earth crust. And the earth crust consists of 7 large lithospheric plates and numerous small plates that move towards each other, apart or past each other. ये जानने की कोशिश करते हैं कि अर्थक्वेक यूजुअली अकर व्हेन टू प्लेट्स आर रनिंग इनटू ईच अदर और स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर व्हेन टू प्लेट्स मीट, विच इज़ कॉल्ड बाउंड्रीज। इसमें 3 वेव्स होती हैं विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, विच इज़ पी वेव्स, एस वेव। सो पी वेव्स विच मीन्स प्राइमरी वेव्स। सो प्राइमरी वेव्स का मेन वर्क इज दैट अ सेस्मिक वेव दैट कॉजेज पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स टू मूव इन अ बैक एंड फोर्थ डायरेक्शंस में मूव होती है वो, राइट। उसके बाद आपका सेकेंडरी वेव्स होता है। सेकेंडरी वेव इज वी कैन से अ सिस्मिक वेव दैट कॉजेज पार्टिकल्स ऑफ रॉक टू मूव इन साइड टू साइड डायरेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद होता है हमारा टर्शरी वेव, सरफेस वेव। सरफेस वेव्स होता है आपका बेसिकली जो दैट डिफरेंट फ्रॉम टू काइंड्स ऑफ वेव्स, इट ट्रैवल्स स्मूथली एंड मोर डिस्ट्रक्टिव। तो ये क्या होता है, जब आपको कॉलिजन होती है किसी चीज़ में, आपने देखा होगा, तो क्लैप्स होने के बाद कोई भी चीज़ वो क्या होती है, इसके ऊपर आनी शुरू हो जाती है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में आपको यहाँ पे जो फॉल्ट्स होते हैं ऐसे ही काम करते हैं। सो ये आपका फोकस्ड है, मेन ये फोकस एरिया फॉल्ट है, एंड ये हमारा मेन एपिसेंटर है जहाँ से ये इसकी ओरिजिन होती है, राइट। एंड द एनर्जी फ्रॉम द शिफ्टिंग टेक्टोनिक प्लेट्स दैट क्रिएट एन अर्थक्वेक एंड वेव्स ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम एपिसेंटर ऑफ दैट क्वेक्स। तो ये आपका देखो नॉर्मल फॉल्ट्स होता है उसमें तो आपका ऐसा होता है। रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है, अपोजिट होती है। एंड जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स होती हैं दैट आर क्रैक्स बिटवीन टू प्लेट्स दैट आर स्लाइड्स पास्ट ईच अदर। तो अर्थक्वेक्स यूजुअली अकर होते हैं बिटवीन टू प्लेट्स के बीच में दैट इज रनिंग टू ईच अदर एंड स्लाइडिंग पास्ट टू ईच अदर। अब ये समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारा एपी सेंटर है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स है, जिसे हम सरफेस वेव्स कहते हैं। ये आपका पी वेव शैडो जोन है और ये हमारा लिक्विड आउटर कोर है। आपको देखो एपी सेंटर में आपका कोर एरिया है हमारा, जो आपका अर्थ का कंडीशन, अर्थ कंडीशन सिंपली दैट वी कैन से हियर इज अपर लेयर इज नोन टू बी अ क्रस्ट, एंड उसके बाद एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मैंटल, एंड हियर इज द लास्ट इनर लेयर दैट इज नोन टू बी अ कोर। द टू डिफरेंट नेम्स ऑफ दैट ऑल्सो वी कैन से दैट इनर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, इनर मैंटल, आउटर मैंटल, इनर कोर, आउटर कोर, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी वेव्स होती हैं एंड सरफेस वेव्स होती हैं दैट ईपी सेंटर यहाँ से स्टार्ट होती है, एंड वी कैन से दैट इज नो डायरेक्ट पी वेव्स और मेंटल में क्रॉस होती है। उसके बाद जो शैडो जोन होता है, शैडो जोन विच मीन्स दैट वी कैन से जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में विच विल हेल्प इट आउट, जो उसको हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड। यहाँ पे मेन ईपी सेंटर को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अर्थक्वेक्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी वो आपका ईपी सेंटर डिसाइड करता है, राइट। अब यहाँ पे देखो ये मेंटल का एरिया है, ऊपर का एरिया, इसको ऐसे समझने की हम कोशिश करते हैं कि अगर टेबल पे कोई भी चीज़ रखी हुई है और आपके टेबल पे कोई भी चीज़ रखी हुई है, 8-10 आइटम्स रखी हुई है, आप टेबल को आपने शेक किया तो जितने भी आइटम्स होंगी सारी शेक होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। सिमिलरली द अर्थक्वेक्स मैकेनिज्म क्वाइट सिमिलर, क्योंकि वो स्टार्ट तो होगी यहाँ पे कोर से, कोर फिर कोर की प्लेट होगी मेंटल से, मेंटल से फिर होगा हमारा क्रस्ट पे जहाँ पे लोग हमें रह रहे हैं यहाँ पे। सो ग्लोबल सिस्मोसिक ग्राफ को समझने के लिए आपको देखना होगा कि हमारा इंटायर अर्थ वॉज डिवाइड इनटू मेनी प्लेट्स लाइक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड देन एशियन प्लेट, फिलिपियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट्स। यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टर्की कैपिटल है अंकारा, और ये हमारा यहाँ पे ये हमारा आता है अरेबियन प्लेट्स। ये 7.8 फर्स्ट अर्थक्वेक यहाँ पे आई थी, दैट कम्स अंदर एशियन प्लेट। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक सी के आसपास का एरिया, जॉर्जिया एंड आर्मेनिया यहाँ पे इस मैप में भी आप आसानी से देख सकते हो। एंड हियर इज द वर्ल्ड मैप, व्हाट एग्जैक्टली द लोकेशन। नेक्स्ट इज पंचरिंग टाइज द रो ओवर बलून्स ओवर चाइना एंड हॉट बटन इशू इन यूएस पॉलिटिक्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि स्पाई बलून थी, एंड स्पाई बलून को फिर शूट किया यूएस ने, ठीक है। एंड लास्ट कल की जो आपकी न्यूज़ पेपर एनालिसिस थी, वी डिस्कस्ड इन द वेरी डिटेल मैनर कि क्या क्या चीज़ें इसमें हुई थी, राइट। सो वी नॉट टू डिस्कस अगेन टू अगेन,
जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में मेरा काम है आपको सारे आर्टिकल्स को शो करना, बट मेक अ शॉर्ट नोट्स ऑन दैट कि हाँ भाई ये आर्टिकल हमारा हो रखा है, बार बार हम इस आर्टिकल को एक ही आर्टिकल्स को बार बार हम रीड नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है टाइम बहुत नुकसान होता है उसमें। सो ये मैं आपको फिर से बता दूं, यूएसए वरीड क्यों है इसमें, क्योंकि पहले पेंटागन सेड दैट इट डिटेक्टेड अ सर्विलेंस बलून। चाइना का ये कहना है कि हम वो सर्विलेंस बलून नहीं था, बट यहाँ पे यूएस ने उसको शूट किया एंड इट्स वॉज अ क्लैश ऑफ बिटवीन द टू नेशन। इट वॉज फाउंड टू बी ट्रैवलिंग एट एन अल्टीट्यूड वेल अबव कमर्शियल एयर ट्रैफिक, एंड मोंटाना इज अ होम ऑफ साउथ ऑफ अमेरिकन मोस्ट लीदल न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए। और यूएसए ने क्लेम किया दैट बलून वॉज बीइंग यूज्ड बाय द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना टू surveil strategic sites to the continental United States. Now, end of life decision. Supreme Court tweaks on directions norms are welcome, but legislation ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 2 days बैक। वी डिस्कस अबाउट इसमें क्या क्या लिविंग बिल जो है पहले क्या था, अब क्या चेंजेस की गई। आपको मेन चीज़ समझनी होगी इसमें के लिए कि अब जो है एन अटेस्टेशन बाय नोटरी और गेजेटेड ऑफिसर्स टू बी सफिशिएंट फॉर अ लिविंग विल। पहले ऐसा नहीं था, पहले इट वॉज नेसेसरी फॉर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं दैट असिस्टेड टू काउंटरसाइन अ लिविंग बिल, ये था इसमें। और पहले टाइम टेकन जो था ओनली दैट इज नो स्पेसिफाई, नाउ इट इज़ 48 hours, दैट इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सेम मतलब सिमिलर आर्टिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें। नेक्स्ट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एडोलेसेंट इंडिया। इन दिस आर्टिकल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. Freedom of speech and expression. So Article 19th of the Constitution. Article 19th of the Constitution talks about freedom of speech and expression. So basically इसमें हुआ क्या, यहाँ पे इस आर्टिकल में आपको है यहाँ पे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशन अगर हम देखें इसे तो द फ्रीडम ऑफ स्पीच वन ऑफ द मोस्ट चेरिस्ड फ्रीडम, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर्स द इंडियन possesses his freedom, this freedom, and but make it subject to interest of public order, sovereign and integrity of India, which means that we have a freedom of speech and expression, but we cannot write something against the sovereignty of India. ये इस आर्टिकल में मेंशन है, this is our right, sole right, which is mentioned in the Article 19 of the Constitution. So we believe that framers of the Constitution accepted this watering down of this fundamental freedom simply because of the notion of the unfettered freedom of speech was foreign to us. और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, इस अ वेस्टर्न नोशन, वाइल सम फॉर्म ऑफ फ्रीडम मे हैव एग्जिस्टेड इन एंशियंट ग्रीस, द रियल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एज वॉज अंडरस्टैंड टुडे वॉज propounded by Voltaire and Rousseau. So there is nothing in our soil that suggested that this freedom took root here. B.R. अम्बेडकर साहब ने बताई थी राइटिंग स्पीच में कि इन रिलेशन टू एंशियंट इंडिया, अगर हम एंशियंट पास देखें अपने कंट्री का, एज टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इट एग्जिस्ट, but it exists only to those who are in the favor of social order. Or the freedom is not the freedom of liberalism which was expressed by the Voltaire, and I said that I wholly disapprove of what you say and will defend to the death your right to say it. So there is a sense of insecurity, और क्या है, aggression, the hallmark of adolescence evident to all the oppressive action being carried out in the country. आपको मेन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन याद रखनी है। एंशियंट पास्ट हमारा क्या था, बिकॉज जो हमारा फ्री स्पीच है इज अनपॉपुलर व्हेन इट unsettles the existing order, and people feel uneasy when someone stand up and says we have been doing things wrong and that things must change. So people must follow the status quo by suppressing unpopular speech, and this enables the state to step in the define the framework within which speech is free. So there is nowhere mention in the Constitution of India which speech is free and which speech has not to be used by the people of India. So Indians seeks to shut down the opinions and expression by others when they feel threatened by it. Obviously, if you are giving criticism to against the government of India, so in that case that you are under the ambit of like this is not this is against the security and sovereignty of the nation. So this article mainly talking about that whether the person have freedom of speech and expression as enshrined in the Article 19 or not. So this sense of insecurity along with the aggression is the hallmark of adolescence and runs as a common thread through the oppressive action we have noticed in this article, right? Now
Moving further, in the next, the demand of MG Narega work is unmet. Just a second. सो MG नरेगा विच इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट. सो इसमें क्या चीज़ दी गई, क्या किस चीज़ की डिमांड की गई है? तो बहुत सारे स्टेट में इनसफिशिएंट फंड्स दिए गए इस बजट में, किसको? MG नरेगा के थ्रू. एंड MG नरेगा इज अ डिमांड ड्रिवन लॉ. एवरी हाउस होल्ड must get work within 15 days of demanding work, and failing which is workers are legally entitled to an unemployment allowance. But this demand-driven aspect has suffered. Getting work and wages is contingent in the household details being entered on the MG Narega software called Management Information System, which is called MIS. And the MIS has been used to subvert the act in many ways, one of which is work demand suppression owing to budgetary constraint, and officials usually give fewer day work to many households or provide many days to work in few households. 2 crore new jobs cards were issued between 2019-20 and 2022-2023. So we can say that the average number of days of employment continues to around 45 days, bearing testimony and demand suppression. And we define unmet demand as the deficit between the work demand and obtained. So यहाँ पे 4 स्टेट जो स्टडी रिलीज करती हैं अक्टूबर 2022 में, दैट इज कंडक्टेड बाय अजीम प्रेम्स यूनिवर्सिटी, नरेगा कंसोर्टियम एंड कॉर्ड, उसमें ये चीज़ डिफाइन की गई. एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री क्लेम करता है कि दैट लो डिमांड हैज़ रिजल्टेड इन बजट कट्स, बट द रियलिटी इज अपोजिट. बजट कट्स हैव क्रिएटेड अ विशियस साइकिल ऑफ डिमांड सप्रेशन, वेज पेमेंट डेट डिले एंड ओवरबर्डन field staff and corruption, and these further discourage worker from the doing MG Narega work. इसमें हमें क्या करनी होगी? Obviously we need transparency of the percentage of work demand must be made readily available for each state. Now the next article is Naval LCA lands on Vikrant, first aeroplane to touch down. MiG-29 follows suit at efforts to currently underway to operationalize the aviation complex. यहाँ पे आपको ये समझना होगा जो ये नेवल हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया यहाँ पे towards आत्मनिर्भर भारत, which is called self-reliant India by the Navy as naval pilots carry out the LCA on board INS विक्रांत. तो इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए. एज वी नो यहाँ पे इसको टाइमलाइन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे INS विक्रांत इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर है, इस INS विक्रांत. February 29, 2009 में किप द शिप इज लेट. अगस्त 2013 में शिप इज लॉन्च फर्स्ट टाइम इन वाटर, और यहाँ पे बेसिन ट्रायल्स कंप्लीट किया गया. जुलाई 2022 में सी ट्रायल्स किए गए यहाँ पे. जुलाई 2022 में डिलीवरी जो थी एक्सेप्टेंस की नेवी ने, सितंबर 2022 में कमीशन किया गया यहाँ पे INS विक्रांत की. तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द शिप इज 262.5 मीटर, मोर देन साइज ऑफ 2 फुटबॉल फील्ड्स. यहाँ पे हाइट 61.6 है. 5 डेक एरिया, ये जो कि हमारे एग्जाम में इतनी ज़्यादा डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको ये ध्यान रखने कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर है. एंड INS विक्रमादित्य. इंडो कनाडा FMR डिस्कस इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन ट्रेड. इसमें इंडियन पैसिफिक कोऑपरेशन ट्रेड जो था दैट वाज टॉप ऑन द एजेंडा ऑफ वी कैन सी कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर्स मिलन जॉली ने, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे कंट्री के एस जयशंकर. एंड द विजिट इज सीन एज दैट अटेम्प्ट टू बोथ साइड ऑफ पुट बायलैटरल टाइज back to track after several turbulent years and focused primarily on Canada's newly released Indo-Pacific strategy. और ये हमारे लिए इतना important है Indo-Pacific cooperation for the trade purpose perspective अगर हम देखें इसे तो. And India welcomed announcement of Canada Indo-Pacific strategy given the shared vision of free, open and inclusive Indo-Pacific. And 2023 में it's our vision that could become the year of India-Canada reset given the Indo-Pacific strategy convergence trade talks which could culminate the EPTA, which is called early progress trade agreement. EPTA, which means early
progress trade agreement. Right? Okay. India to send disaster relief teams to the quake hit Turkey. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे मोदी जी ने डिक्लेयर किया कि इंडिया विल प्रोवाइड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस टू टर्की टू डील विद द devastation earthquakes that hit the country, and this is about taking the meeting of PK Mishra, Principal Secretary of Prime Minister. मीटिंग में ये भी डिसाइड की गई यहाँ पे जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है वो भी उनकी कंट्री में जाएगी. एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है वो आपसे एग्जाम में पूछेंगे. इसका नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. सो जो एनडीआरएफ की टीम है वहाँ पे वो इमीडिएट यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे डिसाइड किया. And now it's time to questions of the day. And question of the day is very, very important. Why I'm telling you? Because at the end you will appear in the exam, so you have to solve many MCQs there, right? So MCQs, why it is important? Because if you are gathered information and you are not solving the questions, so how you got to know that how many questions you are going to be correct, right? So now we will start. Here is the very first question. So what is the main difference between communism and socialism? So option A talking about communism aims for classless society while socialism aims for a fair distribution of wealth. Socialism advocates for government control of production while communism advocates for workers' control. Communism is based on idea plan economy while socialism allows for a mixed economy, and none of the above. So the answer would be your D option. The ultimate goal of communism is to abolish social classes and create a classless society where everyone has equal access to resource and wealth. So basically talking about egalitarian society. Egalitarian society, but it's not possible in the actual life. We can assume that kind of egalitarian society, and in contrast socialism aims to create a fairer distribution of wealth where the means of production are owned and controlled collectively, but there may still be some unequal distribution of wealth also. So D would be the right answer. What do you mean by macrosomia? Somewhere in the news, so it is defined as condition in which a baby is born with an excessive body weight. It is defined as condition in which baby is born with a low body weight. It is defined as a condition in which a baby is born with a birth defect. None of the above. Okay, so it means that it is defined as a condition which the baby is born with an excessive body weight. So more than 4 kg we can say at the time of birth. So A is the right answer. The term used to describe these giant babies in macrosomia, Greek in the large body. Any body that weighs more than 4 kg regardless of their gestational age is said to have macrosomia. So A is the right answer. Moving further to the third one question. If a commodity is provided free to the public by the government, then the opportunity cost is zero, the opportunity cost is ignored, the opportunity cost is transferred from the consumers of the product to the tax paying public, and the opportunity cost is transferred from the consumers of the product to the government.
there are many times is freebie article that we discussed in the newspaper analysis. Based on that, what could be the possible answer? ऑब्वियस सी वुड बी द राइट आंसर. जो भी हमारा टैक्स का पैसा है वो एट द एंड में अगर हम उसे प्रोवाइड फ्री करते हैं तो इट विल द बर्डन ऑफ द टैक्स पेयर्स. So the opportunity cost that represents the benefit of an individual, investors or business misses out when choosing one alternative over another. So when you have an opportunity to access public services for free, this would always come at a cost of somebody paying for it. In this case, the taxpayer bears the opportunity cost. The C is the right answer. Moving to the next one. Which one of the following statements best describe the term black swan event? An economy which is severely starved of foreign currency reserve, vaccination of birds to prevent their high death rates, mass killing of black swan to prevent the spread of bird flu, a rare unpredictable event that comes as a surprise and has a significant impact on society. So obvious the answer would be here option D. So black swan is rare, unpredictable event that comes as a surprise and has a significant impact on society of the world. And these events are said to have three distinguished characteristics. One, they have extremely rare and outside the realm of regular expectation. They have a severe impact after the hit and they seem probable in hindsight when plausible explanation appear. And now we reach to the last questions. Which of the following acts provided for the right to ask questions and discuss the budget? Indian Council Act 1892, Charter Act 1833, Charter Act 1813, Indian Council Act 1861. So obvious answer would be here option A, Act of 1892. And what was the main feature? It increased the number of additional non-official members in central and provincial legislative councils but maintained the official majority in them. It increased the function of legislative councils and gave them the power of discussing the budget and addressing questions to the executive. So this is all about the session, dear student, and I hope you enjoyed the session a lot. If you have any questions regarding this session, please let me know in the comment section. And please share this video to the maximum number of your colleague, friend, because everyone must aware what is happening around us. And that makes you very aware citizen of this country, right? And if you are new in this channel, please subscribe the channel as well. And do not forget to press the bell icon so you will get the notification of Pratham Test Prep YouTube channel. Bye-bye and take care. We meet you in the next class. Thank you so much for joining with us. Apna ख्याल रखें. Bye-bye and take care once again.